Hello. Yeah, hello and welcome to PsyCoolG's Connect webinar number 58, Teachers Day special webinar. So, I welcome each and every participant and I would like to congratulate each and everyone on this special occasion of Teachers Day. Without teachers, we are nothing. That is well said. And so, on this Teachers Day, we are here with a topic which is the need of the hour, which is important to discuss, which we usually ignore sometimes. It is about psychological well-being of the teachers. We should know and we should respect teachers for their efforts, for their hard work, which is going behind on the back end. Basically, whatever the teacher is presenting in front of you, a lot of hard work, a lot of back end process is there, a lot of learning, a lot of experience, a lot of things are there which should be appreciated sometimes. Today is the day of appreciation, and today we will look onto this topic. We will discuss about psychological well-being of teachers. So today we have our well-known speaker, Ma'am Poonam Kamdar, as our resource person to share her views. She is a counseling psychologist certified from NCERT Delhi with an extreme rich experience of more than 22 years. So she is working for 22 years, more than 22 years in school setups and has been actively writing for various popular media houses. I welcome you, ma'am, and I congratulate you also for this Teacher Day occasion. I am a student of yours and I am learning a lot of things from you. And I wish to stay connected with you always. So we will start with the webinar. And before starting, I would also like to tell a few things which are there in the consideration as today is the special day. So in the link description, in the description, you will find a link for certification, and that certification link will start after you attend the particular session. One more thing is that this webinar will not be available, so you have to attend it live, you have to attend it full live, so you cannot skip it, and you don't think that you will watch it again on YouTube because it is on YouTube. So this will be removed abhi nahi to kabhi nahi. So this is the final telecast, and do watch this without missing any second, because I am guaranteeing you, I am betting you that each and every second explained by Poonam Kamdar ma'am will be worth it. I can bet you that. So we will start with the webinar, and the link will be starting at 3:55. So you can go and register on the link at 3:55 when the time will be there, and it will be on till 6 p.m. So till 6 p.m. you can register yourself, not an issue. You have to attend the full webinar for that, and you will find all the registration, all the links basically in the description box. So you can refer the description box and you can just go through the description box for all kinds of links. So we will start with the webinar. Ma'am, I welcome you once again, and happy Teachers Day to each and every participant, and happy Teachers Day to you, ma'am. And we will start now. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Today, definitely, it's a very important day because 5th of September, Teachers' Day, the day where all the mentors, they are recognized for the efforts that they put in for the well-being of their children, of the students in particular. So, those who are attending, definitely, I'm sure you have wished your teachers, and if you haven't, please do wish them because that is one thing that they expect from you all. And those are the teachers who are attending the session. I can tell you for sure. Trust me, it is going. If you attend the entire session, you will have lot of take backs with you all because today's session it is definitely having lot of practical things which if you try to incorporate will contribute towards your well-being and will help you to reduce a lot of stress which is in everyone's life nowadays. So, can you put the first slide, please? Okay, now when I say that today, why this session for teachers? Teachers today, if I say, of course, they take, if you will have a look at the first slide, you will say that you can see it very clearly. The teacher takes a hand of a child. और जब वो किसी हाथ पकड़ने का मतलब क्या है कि हैंड होल्डिंग द चाइल्ड मतलब अगर if the child is in facing any sort of difficulties, the teacher is going to support him. He or she is going to let him have a very smooth sailing in troubled waters so that he can come out with elan. Opens the mind means like they're putting in so much of efforts to make them learn new things, to gain knowledge, practically apply it, and see the entire world from a different perspective. And yes, the teachers they do touch the heart of the children also. Why? Because I'll give you an example, a story here. There was a child, very young child, not academically good. बहुत मेहनत करने की कोशिश करता था पर वो कर नहीं पाता था और बैक बेंचर था. Then he suddenly had there was a shift in the entry of the teacher. There was a new teacher for his class, and this teacher, she called this child, and he was very young. He was in probably in KG, and he touched him and said, "Ha, beta, tell me your name." I mean, the moment the child looked into the eyes of the teacher, he got the message. Okay, तेरा दिल से दिल का connection. He got the message that this person is here as a well wisher, and I can share everything. So that was a day when he changed dramatically, drastically. He started sharing a lot of things with the teacher. How he felt from inside when others are not being his friends, when no one wants to be near him or sit near him due to certain reasons. So he shared everything with the teacher. So actually, after a few years, you can. There was a very apparent change which was visible to everyone in that child. And that is why I say that the teacher touches the heart. So when the teacher's day came, he gave a handmade card to him to his mentor and thanked him from by showing gratitude from within the bottom of his heart. So that is why I say the teacher touches the heart. And whenever, as a teacher, anyone is teaching, one has to make the emotional connectivity. Without the emotional connectivity, the cognitive part will not be, coming out with or providing very good results that way. So a teacher, he or she is a mentor. He's on a long mission, a very long mission. It said that it is not a profession; it is a mission, and the mission is to eradicate illiteracy and reach to every child so that they become better human beings and they can unveil their own potentials. So it is very important that teachers are given due respect each and every time, not only just on 5th September. Now, I would like to share now the multiple roles the teachers are playing nowadays, keeping in mind the lockdown. Lockdown has brought about a drastic change in the ways in which the teachers are teaching and their view. Now, I would like to read out certain things for you all. Now, if one has to be a teacher now, basically they have a lot of responsibility onus. Why? Because they have to ensure that the academic, just pay attention to my words. They have to make sure that the academic,
social, emotional, psychological, mental, physical, and nutritional needs of each and every child that he or she is coming in contact with is met, and that too on a daily basis. They have to be very, very personally touching, caring, loving, and but at the same time maintaining professional relationships with each one of the students. They don't have to be their friend, but have to have a very friendly relation with them. They need to know each and every child. And they have to give attention to every child whosoever is coming to him or her for any reason for that matter. They have to hold them to the higher standard of excellence, but at the same time not to put undue pressure on them, or which might damage their self-esteem or the world's view. So they have to maintain a classroom that is engaging, fun-filled, comfortable, visually appealing. Because nowadays students, they don't want to learn in environment that they don't enjoy. And at the same time, they have to instill a sense of responsibility and independence amongst each student, so that they are able to communicate very well with each other, and they learn the life skills also. At the same time, the important part that they have to play is to maintain relation with their parents as well. That is via the emails, you can say, the text, the phone calls, newsletters, blog posts, anything. My God, don't you think this there is so much of a mammoth task that is to be performed by a teacher. I mean, they are. I don't know if we are actually considering them as human beings or not. They are superheroes in our life. In fact, I must say. And if I अगर मैं ये शब्द कह रही हूँ सुपर हीरो, that means कि मैं कोई ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है. It is not an exaggeration. Why? Because keeping all these multiple roles that I have just now shared with you all, imagine the type of turmoil that they are in, how how it is affecting their psychological well-being as well. So today's session that we have it for today for the teachers exclusively for them is on how they can maintain their psychological well-being and de-stress themselves in a fun-filled way. Next slide, please. So when it is considered regarding, I'll start with now the how they can maintain their psychological well-being. अपने आप को वो कैसे de-stress कर सकते हैं. तो first of all, I'll start with positive affirmations. ये पॉजिटिव एफर्मेशन एक स्टेटमेंट्स, कुछ तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है. लाइक अगर मैं कहती हूँ, अगर आपसे कोई कहता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, I think you'll start feeling good and you'll start believing in yourself. Imagine a classroom time when the teachers were young and their teachers told them, "Ki beta, you're so good in mathematics," or "I like your handwriting so much." And then you came back home repeating all these statements for yourself and saying, "My handwriting is good. I'm good in mathematics. I'm an obedient child." Whatever has been shared by the teachers, I'm repeating in my own mind. So I'm actually saying positive affirmations to myself, which is going to have a very, very clear cut impact on my thought processes, which will be reflected via my actions. I'll give you a very clear example of what could be a type of positive affirmation that we can have. Now, let's say we can give the positive affirmations in the morning hours when there is serenity, when there is absolutely no chaos, and when we are able to connect with ourselves better. कहते हैं ना, अपनी आवाज हम अपने आप से अपनी बड़े क्लियर सुन पाते हैं मॉर्निंग आवर्स में, तो बहुत शांति होती है. तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस है जो कि हमारे लिए बैक रेजोनेट करते हुए वापस आएंगे, एंड इट विल हिट अस बैक and it will create that aura of positivity in and around us. So I'm going to say speak out certain statements. Listen carefully. Today is an incredible day. Success, prosperity, abundance in many different forms have naturally found
their way into my life. I gratefully enjoy their manifestations throughout my day and happily share these blessings of abundance with many others in order to bring happiness to their days as well. Now, certain statements, I can have this poster being placed at a vantage point in my home, in my room probably, and I will speak these sentences while I'm passing by. I am happy. I am healthy. I'm wealthy. I am secure. I am worthy. I am positive. I am blessed. I am grateful. I am beautiful. I am confident. I am courageous. And most importantly, I'm excited about today. I don't feel the burden of anything which is which can lower down my performance. I'm going to give my best shot. So this is a sample of positive affirmations. You can find it over the internet if you search it out, and have a nice poster being made out of it. Take out a colored printout, place it at a vantage point, and see that most of the time when you're passing by, you have a look at that sheet. एक शीट के साथ कनेक्शन भी हमारा जब डेवलप होता है तो हमारी नजर हमारा ध्यान वहीं पे जाता है और एक हम सकारात्मक ऊर्जा उससे ग्रहण करते हैं. So that is very important that you have this positive affirmation sheet placed at the very comfortable place where you are actually, which is approachable to you and you can see it very conveniently. Next slide, please. Now, after positive affirmations, I would like to share some more ways using art as a way to de-stress. I am all gaga over saying this word that art is therapeutic in nature. Art brings out the best of you in yourself, especially जब आप बहुत टर्मोइल में होते हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, when emotions are overpowering you and not allowing you to think rationally. So that way your decisions are all affected by that, your mood is affected. और जब मूड हमारा ठीक नहीं होता तो हम जिस भाषा में बात करते हैं दूसरों से या जिस तरह का रिएक्शन देते हैं वो सब चीजें अफेक्टेड हो जाती हैं. तो जब हम इस तरह की आर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से, तो क्या होता है हमारी जो पेंटअप नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं और हम एक रिलैक्स्ड काम मोड में आ जाते हैं. So I would like to say that art is a great tool to fight your daily stress. It has a relaxing and rejuvenating experience. It's one of the purest forms to express your emotions. और ये हम थेरेपी की तरह भी यूज करते हैं, और थेरेपी तो अगर हम कहें तो थोड़ा क्लिनिकल टर्म्स में आ जाता है, बट आर्ट इन अ डे टू डे can be used very well in our day-to-day life to have a solid impact on our negative emotions. It can curtail those negative emotions. और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें ड्राइंग अच्छी आनी चाहिए. I mean, if you can hold a pen, I think that's good enough. और मेरे ख्याल से सब लोगों ने क्रेयॉन्स तो एक ना एक टाइम में टीचर्स जो पोस्टर्स बनाते हैं अपने क्लासरूम डेकोरेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, दे ऑल आर वेल वर्स्ड कि हमें कैसे कलर्स का इस्तेमाल करना है, कैसे किस तरह के स्ट्रोक्स बनाने चाहिए ना. सो नाउ आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट वन थिंग which you will find it very appealing. वो कहते हैं ना कि कई बार हम देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा आता है करने में. कुछ नहीं, like this is a blank A4 size sheet. Can you all see? This is a A4 size sheet I'm carrying, and I'm having a simple black marker. And this black marker, yeah, this is available. Any brand you can take. That is absolutely up to you. What I will do is I'm going to write my feelings for today. Like I want to be happy. या आज मेरा mood अच्छा नहीं है तो मैं अच्छा क्या करना चाहती हूँ. What I will do is I'm going to make simple. I'm going to make lines like this. Can you see this? This is what I'm going to do.
and then inside I will write down my feeling. Let's say I'm feeling right now some word that is associated with the positive emotion. Let's say I'm using a word waha, WAH. See, like this, I'm using this word waha. What I will do is I will make it, add another dimension to it, double line karke I will make it like this, waha. And here, what I will do is I will make one like sun rays coming out of it. See this? Very simple. Anyone can make it. It's not at all difficult. Now the best part comes in. I mean, I love doing it, frankly speaking, and I like to do it because इससे मेरे को थोड़ा thoughts पे control भी better हो जाता है, and I feel very good when I create a piece. See, what I will do is I am going to make use of this. These are brush pens. These are easily available. You must be having it at your home as well. And what I'm doing is I'm just outlining it with a brush pen. And then what I will do is I'll have another brush pen. I am going to use it like this to make the outline. Now, another color, because colors are again associated with a lot of positivity. What I'm going to do is I'm going to put this color inside W, and then after having W, I'm going to do A. Try to fill it. I'm showing it in a faster mode so that because of paucity of time, but you can take your own time to do it. A, and then I'm going to do H like this. Then again, a very beautiful part comes in. Now I have so many compartments over here. What I'm going to do in each compartment, either I can have these lines like this. It's absolutely up to you what you want to do. 100% जो आपका मन करे. You can have like this. ये थोड़ी थोड़ी लहरें बना सकते हैं आप ऐसे, या फिर आप इसको निकाल करके कोई और सर्कुलर वो बना सकते हैं. Absolutely up to you, but the idea is that you have to fill up the entire area that has come to you, and then you can recolor, you can fill it again with the colors as per your choice. Trust me, once I'll show you how I've created it. See, this is a created version. Once you create it, you will feel highly relaxed. बल्कि जिस पे आपको गुस्सा आया होगा आप उसको भी दिखाने पहुंचोगे कि देखो, this is what I have created. I'll show you certain more this thing which I have created myself. See, this is the thing I created it myself. And then another one, this is an example of a Zentangle. It doesn't take much of a time, just you should have good colors with you, and you should have a free flowing hand on how to practice the things. और इसके बाद जब आपको जो अच्छी जो फीलिंग आती है क्रिएट करने के बाद, उसका मतलब आई एम टेलिंग यू, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है एक्सेप्ट फॉर you'll feel that ये थेरेप्यूटिक जो आपने नेचर एक्सप्लोर किया है अपना ड्राइंग करके, उसका कोई मुकाबला नहीं है. So my request to you all is try it out for yourself today. Pick up the colors that your kids are having. उनके colors निकाल लो. अगर आप grandparents हैं तो अपने नाती पोतों के colors निकाल लीजिए. Or if you have children, young children, उनके colors निकाल लीजिए and just play it, spread it out and be a child. You will enjoy it. You'll find it very, very relaxing. Next slide, please. So now after the colors part, like it is a very good way to de-stress yourself. Now after once we are done with the colors, this thing, we have, now I have another next part with you, that is the power of visualization. When I say power of visualization, मतलब हमारा brain ऐसा strong होता है, अगर आज मैं कुछ सोचने लगूं, तो जैसे अगर मैं कोई अच्छी बात सोच रही हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अपने आप ही हंसी आ जाएगी, मुस्कुराहट आ जाएगी. कई बार होता है ना कि आप लोग भी जब बैठे हुए एकदम से कहते क्या बात है बड़ा मुस्कुरा रहे हो, एंड आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि कोई पुराना इंसिडेंट याद आ गया जो कि दूसरे को नहीं पता क्या बात है, और आपके चेहरे पे एक बार बस मुस्कुराहट आ जाती है. सो दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. आपने कोई चीज बचपन में कोई शैतानी करी थी और अभी आप देख रहे हैं कि किसी को डांट पड़ रही है उसी तरह की शरारत करते हुए, यू कैन रिलेट. वो आपका ब्रेन एकदम से आपको सिग्नल दे देगा और आप याद करोगे और आपको हंसी आ जाएगी. अदर पर्सन माइट गेट ऑफेंडेड कि भाई वो इतनी सीरियस बात पे डांट रहा है और आपको हंसी आ रही है, बट देन यू आर रियलाइजिंग, यू आर ट्राइंग टू गेट इट बैक आउट ऑफ योर मेमोरी. तो इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं अपने उसमें, मतलब जिससे कि हमारा स्ट्रेस वो रिलैक्स हो जाए, रिलीज हो जाए.
Now, I'll ask you all, those who are attending the session, to kindly close your eyes and listen to my. Why I'm asking you to close your eyes? Because you can get rid of all the distractions that way. Listen and focus on what I am speaking. Imagine the happy moments in your life. Maybe when you were very young, when you performed a trick, or maybe when you were rewarded for an act, or when you did something really good which was appreciated and praised by all. Remember those moments. Or maybe you won an award, or your teacher asked you to come in front of the entire class and she made everyone applaud for you. Feel that moment, relive that moment, think about what has happened at that time, go down the memory lane. Now slowly open your eyes. I'm sure there is a smile on your face and you're feeling too good about the whole thing. हो सकता है अभी आपकी आज 5 सितंबर को क्लासेस हुई हो, आज आपने पेपर बनाया हो, या फिर आप अरेंजमेंट का करके आए हो कि किस तरीके से पेपर की मार्किंग स्कीम करनी है, एंड ऑल दोस थिंग्स एज अ टीचर. बट देन आई एम श्योर इस छोटी सी गाइडेड इमेजरी ने या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ने आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया अपने उस मोमेंट के साथ जिसमें आपको हैप्पीनेस मिली थी और आपको बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आई थी. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जस्ट गो डाउन द मेमोरी लेन. सोचिए उन बातों के बारे में जो आपसे रिलेटेड है और बहुत पॉजिटिव आपको एक सोच देती है, एक एनर्जी देती है. इस समय पर वो नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिएगा कि उस दिन ये हुआ था तो मुझे डांट पड़ी थी. नहीं, एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी एटलीस्ट अपने साथ, दैट आई वुड लाइक टू शेयर प्रैक्टिकली. पता नहीं हमारे मेमोरी में ना बड़ा सॉर्टिंग आउट होती है सारी चीजें. आज अगर मैं अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ, अच्छा काम करती हूँ, तो हर चीज अच्छी 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 होनी शुरू हो जाती है. जहां मेरे मन में एक थॉट आता है, नेगेटिव आने शुरू हो जाता है, ओहो उस दिन तो मैं लेट पहुंची थी, अरे मेरे को उस दिन मैम ने कहा था कि तुम अपने यूनिफॉर्म में नहीं आए हो, तो एक साथ मेरी नेगेटिविटी का सारा, कहते हैं ना कि डोर्स खुलने शुरू हो जाते हैं एंड द वॉर्म्स स्टार्ट कमिंग आउट. So we don't want the worms. We want to release our stress. We want the flowers and be with the fragrance of the flowers. So we are going to make open our positive एक्सपीरियंसेस और उनके बारे में हम सोचेंगे तो एक एक करके वो हमारे पैंडोरा बॉक्स में से निकलने शुरू हो जाएंगे और हम थोड़ी ही देर में रिलैक्स फील करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Another activity which is very close to my heart, because you must have realized by now that I love colors. मतलब हर चीज मुझे, I like brightness in life. मुझे बहुत actually reality में पसंद है. और मुझे somehow ये लगता है कि when you have bright things in and around you, bright people in and around you, bright thoughts in and around you, somehow the aura that is near you, that which is circumventing you, then that aura is very full of positive energy. तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ कलर्स और मैं कोशिश करती हूँ कलर्स, इन सब चीजों को अपने आसपास सराउंडेड रहूं. Today also I bought a lot of stationery and colorful things from the market today before this session because मुझे लगा I need some extra pep up for today, something different and unique. तो ये है my next activity is coming glitter jar. I mean these are two jars, यानी कि माइंड जार भी इसको हम कहते हैं. There's another name for it, माइंड जार. You must be wondering इसमें क्या है. ये तो मैम कुछ बॉटल्स दिखा रही है जिसमें हम शायद कोई अचार या कुछ रख सकते हैं. एक्सेप्टेबल, ये कुछ वैसी बॉटल्स हैं. बट द थिंग इज इसको साफ करके हम यूज कर सकते हैं अपने ग्रामीण ग्लिटर जार बनाने के लिए. ग्रामीण ग्लिटर जार का मतलब है, थोड़ा सा मैं ब्रॉडली आपको बताती हूँ. इट हैज ग्लिटर्स जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएंगे.
calming, इनका एक calming effect होता है, एक soothing effect होता है, which can help you a lot, help you in controlling your emotions, your negative emotions. Now, it is full of water and glitter, and then you shake it basically. You know, water, when I say that water is, it is a representation of your mind, whereas this glitter is your thoughts, your worries, your emotion, और your turbulent times जो इधर उधर थोड़ा आपको disturbance लाता रहता है. तो हम क्या करते हैं इसमें, like I'll show you, see, this is my glitter jar, can you see this? I'm shaking it. See this. I'm shaking my glitter jar, and what I will do is shake करते करते tightly बंद होगा ये, नहीं तो सारा पानी बाहर आ जाएगा. You have to be very careful about it. इसको shake करने के बाद what I will do is I will just have a look at the glitters. See my glitter jar. छोटे छोटे इसमें glitters है, मैं इनको देखूंगी थोड़ी देर तक calmly बैठ करके, and I will allow it to settle down. धीरे 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 ये एक थोड़ा टाइम लेंगे और ये सारे के सारे ग्लिटर्स सेटल हो जाएंगे नीचे, और पानी एकदम क्लियर हो जाएगा. यू नो, थोड़े हेवी है तो इसलिए नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगे, और पानी एकदम ऊपर का क्लियर होता चला जाएगा. और यू विल ऑब्जर्व कि थोड़े टाइम बाद ये इनका प्रोसेस थोड़ा हल्का हो गया है सेटल होने का. इट विल टेक सम मोर टाइम टू सेटल. So I am going to observe it, see, and wait for every particle to settle. And side by side, my breath will also be associated with that. Means like मेरी breath एक ऐसा coordination में in sync होते हुए काम करेगी कि I will be totally calm down once everything has settled. It will take some time. So this was just for a demonstration. You can try it out for yourself. Need not buy any bottle. आपके घर में ही होगी, but bottle choose करते वक्त just have a look. I mean, consider that it is थोड़ा सा clear कांच हो उसका. वो कहीं पे थोड़ा ups and downs वाला अगर आप लोगे तो you will not be able to see the things clearly. Even जब ग्लास हमारा थोड़ा पतला होगा तो और अच्छा आपको नजर आएगा. Secondly, इसका ढक्कन जो है ऊपर का, that should be the cap of this jar, mason jar. It should be tight. अगर वो टाइट नहीं होगा तो जब आप शेक करेंगे तो वो सारा पानी बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट केओस, और फिर आप अननेसेसरी फिर और आपके नेगेटिव इमोशंस आएंगे, वो क्या बेकार की चीज मैंने सीखी थी, राइट? सो शेक द जार, सी, क्रिएट दैट swirl of thought. आने दीजिए उसको, एक थोड़ा बवंडर मचने दीजिए जैसे आप उसको हिलाएंगे. ऐसे जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या गुस्से में होते हैं या कोई ऐसे कोई भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, जेलसी का आ रहा है, तो उस समय पे क्या होता है, हमारे अंदर इतना एक तूफान मचा हुआ होता है, लगता है कोई कुछ आ जाए सामने तो उसको अच्छे से हम कुछ बता दें. पर हम ऐसा कई बार कर नहीं पाते क्योंकि कोई चीजें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो क्या होता है, हम इन इमोशंस को दबाते चले जाते हैं. बेस्ट थिंग इज गेट बैक टू योर रूम, हैव दिस जार विद यू, शेक इट एंड सिट एंड ऑब्जर्व इट. After doing it for some time, you will realize that it has a calming effect on your mind and you have relaxed quite a bit. और water जो है आपका एकदम clear हो गया है, and धीरे धीरे ऐसे ही आपका mind भी clear उसमें आने लगेगा, and it will be able to comprehend the things very well. Next slide, please. Okay, now here I have something for everyone. As a teachers, yes, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लाफ्टर को एक स्ट्रेस बस्टर की तरह देखें. You know, it's a serious matter to laugh. It's not आप ये मत सोचिए कि लाफ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सोचना भी तो पड़ता है हमें कि हम कब लाफ करें, कोई जोक सुनाया जाए या कोई हमारे सामने कोई लाइटर मोमेंट्स आएंगे तभी तो हम लाफ कर सकते हैं. Otherwise things become so difficult for all of us. So how do we create that kind of a time when we can actually laugh? How I can take it as a therapy or as something, as a time when I can actually laugh. Now, कहते हैं ना, एक सिंपल स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी. लाफ्टर योगा, इट इज अ थेरेपी, इट इज थेरेप्यूटिक इन नेचर, एंड laughter therapy, laughter yoga has been introduced in India by Dr. Madan Kataria. He's a laughter guru. In fact, उनके all over world उनके classes laughter के चलते हैं, and we have a Delhi laughter club here in Delhi where every day laughter classes are being held. तो इसमें क्या है, सिंपल प्रिंसिपल क्या चीज है, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं कि अगर हम ऐसे ही हंसना चाहें तो हम नहीं हंस सकते, तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए गए हैं.
ना छोटे स्टेप्स में एक है जब भी कोई चीज हम रिदम के साथ करते हैं, रिदम के साथ में, लाइक इफ आई डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू, like if I'm doing a bit of clapping, see the rhythm in it. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, so you can see the rhythm. माइंड हमारा उसके साथ ट्यून होने लगता है. तो कहते हैं ना, जब आप शोर हमें बर्दाश्त नहीं होता, कोई कहीं पे बहुत कर्ण फोड़ू म्यूजिक चल रहा है, दैट कैकोफोनस हिला बोलू, तो आप वहां से भागना चाहोगे. लाउड स्पीकर पे बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ बता रहे हैं, तो आप वहां पे बैठना नहीं चाहोगे. बट अगर आपके सामने बहुत सुंदर आवाज में कोई गीत गाया जा रहा है या कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कोशिश करोगे कि हम इसको अटेंड करें, क्योंकि आपको बड़ा सूदिंग और कामिंग इफेक्ट नजर आ रहा है. तो जब हम रिदम पे कोई अपना करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं लाफ्टर की, तो एक पैटर्न बनता है और हमारा ब्रेन भी एक्सेप्ट करता है कि अब इसके बाद ये चीज आने वाली है, विच इज गोइंग टू हैव अ वेरी सूदिंग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ. तो एक रिदम के साथ में, लाइक देयर इज अ सर्टेन टर्मिनोलॉजी, आई जस्ट शो इट टू यू. See, what we do is in laughter exercise, we put our hands together in right in front. Can you all see me? Okay, we put it like this and say ho ho ha ha, ho ho ha ha, ho ho ha ha. This is a rhythmic pattern. अब इसमें एक्सरसाइजेस जब होती हैं, लाफ्टर एक्सरसाइजेस, तो कहते हैं कि हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती कि हम रियल में कर रहे हैं लाफिंग या फिर हम फेक कर रहे हैं. इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. और जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, तो क्यों नहीं हम लाफ्टर का बेनिफिट उठाएं फेक इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करके. सो दैट इज द एंटायर आइडिया अबाउट इट. So with the laughter, I'll just demonstrate a laughter exercise. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे साथ में हंसेंगे, बहुत जरूरी, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिना हंसी के ये एक्सरसाइज नहीं होगी, क्योंकि लाफ्टर के बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सेरोटोनिन लेवल्स को हमारे ब्रेन के क्यों ये हाई करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस, अ वेरी गुड वे टू कॉम्बैट स्ट्रेस, आई मस्ट से. So I will demonstrate certain laughter exercise with you all, in front of you all. First of all, let's start with आप हम लोग करते हैं. Let's bring your hands together. Give me full slide. Let me be on full screen, please. हाँ, दोनों हाथों को हम आगे लेकर के आएंगे और धीरे से हम मुट्ठी बांधेंगे अपनी. Can you all see me? धीरे से मुट्ठी को बांधेंगे और इसके बाद हम यहाँ से अपना हाथ खोलते हुए पीछे की साइड लेकर के आएंगे, and we will laugh with that. Can you do it? Just try. Then ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. So this is one exercise which is for the beginners basically, whenever we are introducing laughter exercises to them. एक और बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि हम सब जानते हैं. आजकल देखिए सब लोग कोरोना के टाइम में सबने नमस्ते को अपना वो बना लिया है, सिंबल बना लिया फॉर ग्रीटिंग. अर्लियर इट यूज्ड टू बी हैंडशेक, बट अब हैंडशेक विदेशों में भी नहीं हो रहा. they have accepted our Indianized version of greeting each other. So this is a way to greet when we go for laughter sessions. See, this is what I'm going to join my hands, very simple, and when I'm greeting others, I'm just going to smile and laugh. Like I'll demonstrate in front of you, and you can try it at your home, provided others don't get disturbed at your home. See, we are going to do it like this. Do it like this. Again, happy hormones will be released and you will feel very much relaxed. अब एक और चीज है, एक और मैं इंट्रोड्यूस करती छोटी सी एक्सरसाइज इसके अंदर की, लाइक वी ऑल लाइक टू लुक गुड. हम सब चाहते हैं बहुत अच्छे लगे और लगते भी हैं, ऐसी बात नहीं है. तो इसमें हम हर चीज इमेजिनरी यूज करेंगे. Like we'll have something like if I want to look good, I want to have a selfie for myself. ठीक है ना, हम सब सेल्फी लेना चाहते ही हैं और जनरली मैंने देखा है कि ग्रुप में सभी कोशिश करते हैं कि सेल्फी लें अपनी. तो what we will do is, this is again a part of laughter exercise. What I'm going to do is I'm going to raise my hands up. धीरे से मैं सेल्फी का पोज बनाऊंगी and then I'm going to take selfie
by moving in different directions, क्योंकि हम सेल्फी लेते हैं तो यही तो करते हैं, तरह तरह के मुंह बना बना करके हम सेल्फी लेते हैं. I'll show it to you. See, hands up, selfie, and then so this is how I am going to take the selfie of myself and laugh also together. This is imaginary, but इसको सुनते ही मेरे ख्याल से आप लोग शायद बैठे बैठे हंस भी रहे होंगे, और आज आपको लगेगा कि बातें जो बताई जा रही हैं ये सच में बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप घर में जरूर किसी ना किसी को बताएंगे. आई एम 100% श्योर अबाउट इट, बिकॉज एक हैप्पीनेस जो आप लोगों को मिल रही है और कुछ रोचकता का अनुभव हो रहा है कि वाह ये कैसा बढ़िया तरीका है हमें कुछ अपने स्ट्रेस को रिलीव करने का. आई एम श्योर यू आर लर्निंग अ लॉट आउट ऑफ इट. देन आफ्टर दिस क्या होता है, टीचर्स को, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बच्चे कहे ना कहे बट वो आप लोगों को प्रेज करते हैं. ऐसी सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर मे बी यू हैव बीन स्ट्रिक्ट. कई बार होता है हमें स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, दैट इज रिक्वायर्ड. पेरेंट भी तो स्ट्रिक्ट होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है. मैं मैंने इतनी अच्छी टीचिंग करी, इतनी अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, नो वन अप्रिशिएटेड मी. तो उस समय पे मेरे हैप्पी हार्मोन्स तो रिलीज हो ही नहीं रहे. मेरे को बड़ी लग रहा है कि लाइक मैंने क्यों किया, ऐसा तो नहीं करती तो ही ठीक था. नहीं, द थिंग इज हमें दूसरों से शाबाशी की क्या जरूरत पड़ रही है. Can't I praise myself? क्या मैं अपने आप को खुद शाबाशी नहीं दे सकती? I can do it very well. But I am the person who needs praise, and I am the person who's going to give the praise. So what I will do is I will bring my hands straight. देखिए आगे की तरफ लेकर के आएंगे अपने हाथ को, एंड रिदम के साथ हम इसको लेकर के आएंगे. ये एक हम अपने आप को शाबाशी देंगे. I'll just do it in front of you all and you try it yourself. ये ये so praise yourself quite often. कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रेज करे. आप अपने प्रशंसक खुद ही बनिए ना. अपने आप को क्रिटिकली भी इवैल्यूएट करिए कि क्या चीज मैंने ठीक नहीं करी. मतलब अगर हम खुद ही अपने बहुत अच्छे क्रिटिक होंगे और हम अपने आप को खुद ही प्रेज कर पाएंगे, तो आई थिंक आवर वर्क इज डन. हमें किसी और के इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी आर इन द राइट डायरेक्शन. ये छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम कर सकते हैं लाफ्टर एक्सरसाइज के अंदर. एक और बताती हूँ मैं आपको, विच विल फाइंड इट वेरी अपीलिंग. स्माइलीज आजकल मेरे फोन में, तो अभी मैंने रिसेंटली नया फोन लिया है, तो उसमें बड़ी सारी स्माइलीज वगैरह नए कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे आइकन्स आ गए. अब तो सोचना पड़ता है कौन सी स्माइली डालूं, क्या करूं. तो यंग जनरेशन तो बहुत अच्छे से जानती है कि स्माइलीज क्या है. एक हम स्माइली लाफ्टर करते हैं, छोटा सा कुछ नहीं. हम हाथ से स्माइली बनाएंगे, अपने हाथ को आगे लेकर के, लाइक एक पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फुल सर्कल. सी, एंड वी विल से ये आई जस्ट शो इट टू यू. ये then I'm going to make the eyes, another eye, and then smile. Just observe it once again. ये So this is a smiley for yourself, a virtual smiley, an imaginary smiley, which can bring a lot of smile in your face and in your life rather, and you'll feel very happy about it. Now remember that laughing, as I've shared, it's a serious matter, huh? It is not all that easy, but it has no cost. There is no overdose of this laughter as a medicine, and there are no side effects. हाँ, एक side effect है, it is contagious. बट अगर आप हंसेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल है, तो दूसरा जरूर बरबसी हंस पड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे वाह ये हंस रहे, तो जरूर कोई कारण होगा इसके पीछे. तो क्रिएट दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सी हाउ इट इज गोइंग ऑन, और कोशिश करिए कि आप हर तरफ स्प्रेड करें. एक लास्ट और लाफ्टर एक्सरसाइज और करते हैं, छोटी सी है, बहुत सिंपल सी है, विच इज नॉट डिफिकल्ट अगेन. कि हमारे आसपास मैं मानती हूँ कि बहुत सारे तरह तरह के घोस्ट्स हैं, घोस्ट भूत है हमारे आसपास में. तो हम क्या करेंगे, एक एक भूत को पकड़ेंगे और उनको बाहर दूर तक पटक के आएंगे. तो व्हाट आई विल डू, पर ये सारे काम भी हम, मतलब वी ऑल आर पॉजिटिव टीचर्स, वी टीचर्स विद पॉजिटिव थॉट्स. तो हम क्या करेंगे, हम इन भूतों को पकड़ेंगे बड़े पॉजिटिविटी के साथ में, ठीक है ना, और ऐसे पकड़ेंगे और हंसते हंसते पकड़ेंगे उनको, और फिर जाकर के उनको यूं फेंक देंगे, so that there is no negativity का कोई भूत हमारी लाइफ में नहीं रहेगा. तो we'll be happy human beings. So let's start with,
So I'm going to catch hold of, एक एक करके मैं तरह तरह के भूतों को पकड़ती हूँ. Like this is my hand will go here. I'm catching the भूत. आज ये निराशा का भूत मैंने पकड़ लिया है और इसको मैं जोर से पटकने जा रही हूँ. Again. ये अब एक जेलसी का भूत और पकड़ लेते हैं. ये फिर एक बर्थलेसनेस का कई बार भूत आ जाता है जब हमें प्रेज नहीं मिल रही है, उसका भी भूत पकड़ते हैं हम. ये so these are different types of भूत घोष जिनको हमने पकड़ के अपनी लाइफ से बाहर भेज देना है ताकि हमें कोई किसी तरह की ट्रबल्स ना रहे और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स हमारे लिए नहीं रहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब इसके बाद एक और जो हमारे आता है, एक फन टाइम है छोटा सा टीचर्स के लिए. कई बार हम फन टाइम में इन्वॉल्व नहीं होते. आजकल कोरोना के टाइम्स हैं और हम लोग बहुत सारी वोकैबुलरी नई नई सीख रहे हैं. छोटा सा ये है, दोज हु नो द आंसर्स प्लीज fill up the words है, alphabets है rather, so try to fill it and answer in the chat box. Those who can try it out. ये सारे के सारे कोरोना से रिलेटेड है. अरे कोरोना ने अगर मैं टीचर्स की पॉजिटिविटी की बात कहूँ तो टीचर्स ने हमें मतलब कोरोना ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखाया है हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर कोरोना टाइम मोमेंट्स और लॉकडाउन मोमेंट्स. मतलब अपना फैमिली टाइम हमारा बढ़ गया है और इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारी चीजें करनी सीखी हैं. और जब ऑनलाइन हमने सीखी है तो इमेजिन वी आर नॉट जस्ट कंफाइंड टू द लोकल लेवल्स. हम एक पर्टिकुलर एरिया से अब एसोसिएटेड नहीं रह गए. क्या है, वी कैन बिकम a teacher who can take the students or can teach the students from the entire globe now. So it has a lot of positivity. और कहते हैं ना, एक टीचर जो होती है उसके तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया वो रहता है कि पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव सोचना. हालांकि पॉजिटिव वर्ड आता है तो वो पॉजिटिव तो सोचने लगता है कि कोरोना पॉजिटिव की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है. टीचर्स आर पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेन टू बी पॉजिटिव. Okay, yeah, the fun time, it says I don't know how if you have tried to find out the answers. Okay, the first one is can anyone try it out and put it in the chat box? First one is chlorine dioxide. Second one is purification. Third one is fumigation. ये सारे नए टर्म्स है जो भी हमने कोरोना के टाइम में सीखे हैं. और देन द नेक्स्ट इज, अब हमें बहुत सारी चीजें और भी अपने आप को करनी पड़ रही है. दैट इज मेक इन इंडिया. ये मेरा इंडिया. एंड देन लास्ट इज, yeah, very good, eco friendly. Someone has mentioned over there, made in India. Urmila Yadav, very nice. Isha Arora, very nice, eco friendly. So you all are here with me and you're enjoying. I'm very sure about it. That's really good. When everyone participates, जैसे स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं होल हार्टेडली. Okay, so please move on to the next slide. The answers are mentioned in the next slide, which I've already shared. That is chlorine dioxide, purification, fumigation, make in India, eco-friendly. Next slide, please. Now, music, I feel it has a very, very powerful impact on everyone. Relaxed music, मैंने पहले भी बताया था. और जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे सोल स्टारिंग म्यूजिक होता है. वी गेट कनेक्टेड विद आवरसेल्फ. तभी आपने देखा हो मेडिटेशन के टाइम पे बड़ा लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा होता है विद लिटिल बिट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आई वांट यू ऑल टू लिसन. कैन यू प्ले द म्यूजिक प्लीज? I want everyone to pay attention to this light music which will be played in some time, and you can see the difference for yourself. आजकल क्या होता है कि हम लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं, बहुत लाउड होता है, रैप्स होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है और कुछ वर्ड के मीनिंग्स और मतलब कुछ कनेक्टिविटी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है. कुछ का कुछ हम इधर से उधर तार जोड़ के कोई भी वर्ड बना देते हैं, तो इतना इंजॉयबल नहीं होता. वैसे तो इंजॉय करते हैं बट रिलैक्सिंग नहीं होता. So if you listen to some music which is instrumental in nature, you will enjoy a lot. Please pay attention, all of you. Close your eyes and listen.
Okay, you may close it down. Okay, this was just a sample to share with you all that what type of impact relaxing music can have on all of us. हम लोग अपने गैजेट से इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेटे लेटे भी, सोने से पहले भी हम फेसबुक चेक कर लें, लास्ट मैसेज देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें कुछ आया तो नहीं, छोटा सा खटका होता है हम फोन के पास पहुंच जाते हैं. माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज कि थोड़ा टाइम अगर सुनना है, थोड़ी देर के लिए ये ऐसा म्यूजिक सुनिए जहाँ पर आप कनेक्ट कर सके नेचर के साथ में अपने आप को, बिकॉज वी ऑल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. तो हम जब कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हम उसके साथ अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट के साथ वो हमें कामिंग और सूदिंग इफेक्ट देती है मदर नेचर हमें. तो ट्राई टू गेट एसोसिएटेड विद सूदिंग म्यूजिक so that because it has a solid calming effect on ourselves. Next please. Next slide. Okay. uh, then after this there are these are the common tips that you have if you have attended a lot of sessions, you will find that they all share about exercise, taking a nap, exercise. Yes, इससे again मैं कह रही हूँ एक एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं which may gives you a feel good factor. तभी भी आप देखिए दौड़ के आ रहे हैं, तो कहते हैं ना जब बच्चे क्लास के अंदर होते हैं तो बड़े थोड़ा हाइपर से महसूस करने लगते हैं. कई बार अगर 2 3 4 क्लासेस एक साथ हो जाती हैं, दे वांट सम मूवमेंट. सो विद अ बिट ऑफ एक्सरसाइज they are able to calm themselves. तो जब बच्चे कर सकते हैं, why not ourselves? हम क्यों नहीं थोड़ा वॉक करते हैं? आजकल अगर लॉकडाउन में, अब तो खैर मास्क लगा के हम वॉक कर सकते हैं, ऐसे वैंटेज टाइम में जब बहुत ज्यादा लोग नहीं हो, दैट वी कैन डेफिनेटली ट्राई. बहुत लोगों के घर में ट्रेडमिल्स हैं, या इंडोर्स भी अगर रहना है तो वी कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ, वी कैन डांस, वी कैन प्ले म्यूजिक एंड डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ द म्यूजिक. एरोबिक्स हम कर सकते हैं उस समय पर. मतलब अगर करना है तो हम ये सारी चीजें, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट व्हिच इज हेल्पिंग अस टू काम डाउन आवर नर्व्स. देन टेकिंग अ नैप. रात को हम लोग बहुत ज्यादा देर तक जगते हैं सभी में, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो पढ़ने के लिए जगते हैं, बट पढ़ने के साथ साथ बार बार नजर जो फोन पे जाती है, तुमने कितना कर लिया, कैसे है. इफ यू विल कैलकुलेट, 3 घंटे में से हमारी प्रोडक्टिविटी केवल 40 मिनट्स की निकलती है, एंड वी आर टायर्ड. लगता है अरे किया क्या, पढ़े तो 3 घंटे जगे थे एक साथ, बट पता नहीं क्या हमने, प्रोडक्टिविटी तो कुछ भी नहीं आई. टेक नैप, कीप योर गैजेट्स अवे एंड स्लीप. हैव दैट पीसफुल स्लीप. चाहे वो आपकी 6 घंटे की नींद होगी, यू विल फील रेजुविनेटेड एंड रिलैक्स्ड. मतलब जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड में जो, बॉडी में इनफैक्ट जो हमारे तोड़ फोड़ हुई है, वट एवर, मतलब वो अपने आप को एक तो सारे एनर्जीज लगा करके रिपेयरिंग में मोड में आ जाता है. और जब रिपेयरिंग मोड में आता है तो क्या होता है कि उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव और अलर्ट मोड में होता है. वी आर एबल टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स बेटर, एंड वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड to the needs of others also very well once we have taken a good nap. टेक पावर नैप्स इफ इट इज रिक्वायर्ड. अगर घर पर है, आपने बहुत ज्यादा बहुत देर तक ऑनलाइन क्लासेस ली है और लगाए, आप थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, थोड़ा नैप ले लेना चाहिए, जस्ट टेक, पुट एन अलार्म ऑफ 20 minutes एंड जस्ट टेक अ पावर नैप. दैट पावर नैप विल गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी. उसको आप इग्नोर मत करो कि वो अभी तो 4 बज गए, अब मैं अभी थोड़ी देर लेट गई या लेट गया तो फिर क्या होगा कि मैं आगे रात को नींद नहीं आएगी. नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट. Okay, so make use of those power naps so that you are able to make maximum. Tired way में अगर आप continue कर तो लोगे, but you will be stressed out. So relieve yourself of those stress levels. Then here one more thing which is again very important. Show me the slide please. That is some people what they do is कि उनको लगता है कि pet होना चाहिए हमारे पास में. It is not, I'm not saying that it is mandatory कि pet के अपने बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं, तो वो भी कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता है. बट अगर आपको लगता है कि कोई पेट के साथ इफ यू आर एबल टू प्ले एंड यू हैव इट एंड यू एबल टू मेंटेन दैट पेट, तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर आल्सो. यू नो व्हाई? क्योंकि ये बोल तो कुछ पाते नहीं है, दे विल रिस्पॉन्ड टू अस लाइक अ चाइल्ड एंड वी विल फील वेरी गुड अबाउट इट. हमें लगेगा ओह ये बच्चा, ये कोई हमें टोक नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, और ये जैसे मैं हंस रही हूँ तो मेरे ऊपर गिगल करता हुआ आ रहा है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग विल बी देयर व्हिच इज गोइंग टू हैव अ वेरी पॉजिटिव impact on all of us. Listening to music, I've already shared with you all. And meditation, yes.
कई बार क्या होता है कि इट्स नॉट दैट मेडिटेशन कि हम पोज में बैठ के मेडिटेट करते हैं. मेडिटेशन कैन बी आप कुछ भी मत करो, स्टिल होकर के कमरे में जाके लेट जाओ, maybe for 15-20 minutes. Let your mind not think of anything. Just lie down flat on the bed. That is also a way to get connected with yourself. So try these simple things which are not difficult. Only thing is हमें एक awareness अपने लिए रखनी होगी और awareness अपने mental health को लेकर के रखनी होगी. Because I am important for myself. और अगर if I am able to take care of my mental health, people around will me near me will be very happy for being connected with us. Next slide, please. सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, चेंज योर परसेप्शन. कहते हैं ना कि अगर अपना नजरिया बदल लोगे, चश्मा जो लगा हुआ है अगर उसका नजरिया बदल लोगे, आप अपना नजरिया बदल लोगे, तो आप बहुत कुछ ज्यादा बदल सकते हो. आपको वो चीजें इतनी तकलीफें नहीं देंगी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मतलब इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. साइकोलॉजी में आप लोग काफी लोग फेमिलियर भी होंगे इस चीज से, कि जैसे कि अगर हम अपना परसेप्शन बदलते हैं. यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ पेंसिल का. जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एक पेंसिल लिखे कि लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, एक एनालॉजी ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल से, बहुत स्मूथली चल रहा है. बट एकदम क्या होता है कि अचानक से कभी कभी अनडाउट सिचुएशंस आ जाती है, अनवांटेड सिचुएशन, आपकी पेंसिल टूट गई, आप क्या करोगे? पेंसिल टूट गई एंड यू आर वरीड एंड यू आर लैमेंटिंग ओवर द इश्यू. या फिर आप क्या करोगे? आप उस पेंसिल को उठाओगे और उसको दोनों, एक पेंसिल का पार्ट को दोनों साइड से छीन लेंगे और दूसरी पेंसिल जो बची है उसको वन साइड से. सो नाउ पहले आप एक ही पॉइंटेड उससे लिख पा रहे थे, नाउ यू हैव 3 pointers टू राइट फ्रॉम. सो सी हाउ गुड इट इज. मतलब एक ये अपॉर्चुनिटी हो गई आपकी. अब अगर आज मैं लॉकडाउन के टर्म्स में बात करती हूँ, तो लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो मेनी ऑफ अस मे ब्रूड ओवर इट. क्या मुसीबत आ गई है, ऑनलाइन कराना पड़ रहा है, इतना कुछ सीखना पड़ता है, वीडियो भी बनानी पड़ती है, असाइनमेंट्स पे एक्स्ट्रा तरीके की रिसर्च करनी पड़ती है. बट टेल मी वन थिंग, अगर ऐसा कभी नहीं होते, ऐसी सिचुएशन नहीं आती, तो क्या हम और आप इतनी मेहनत ऑनलाइन के लिए करते हैं? Hasn't it opened a lot of doors of opportunity in front of all of us? आज मैं अगर कोचिंग देना चाहती हूँ तो आई कैन हैव क्लाइंट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो. मेरा एरिया जैसे मैंने पहले बताया था, अब वो केवल यहाँ पर अपने पर्टिकुलर सिटी तक सीमित नहीं रह गया है, अपने एरिया तक सीमित नहीं रह गया है. आई कैन, माई रीचेबिलिटी इज टूवर्ड्स सो मेनी पीपल. So that is what it has taught me. My presentations have become better. My teaching style has been upgraded to such a great extent. My kids are liking me because I am able to pay attention to their sensory needs also. मैं आज उनके केवल काइनेस्थेटिक पे भी फोकस कर पा रही हूँ. मैं उनके किस तरीके से वो मुझे आंसर्स दे रहे हैं, आई कैन सी इट इन ऑल, एंड आई एम शोइंग देम मेकिंग प्रेजेंटेशंस. मैं उनकी ऑडिटरी और विजुअल सब तरीके के उनके जो लर्निंग मोड्स है उनको अटेंड कर पा रही हूँ. आई एम एबल टू केटर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स नीड्स वाया दिस टेक्नोलॉजिकल पार्ट. सो इट हैज हेल्प मी इन ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इन अ बेटर वे. अब कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स भी कम हो गए हैं. अभी तो एफर्ट्स हैं, बट एक टाइम के बाद व्हेन आई हैव ऑल द थिंग्स, माय प्रेजेंटेशंस रेडी, I think by next year it will all, I'm just going to take out a presentation, it is all organized, and I'm just going to show it to my students with a little change here and there. So it has upgraded my learning and upgraded my skills, और skills जिनकी हम आजकल बात करते हैं. So change your perception, अपना नजरिया बदलिए. Next slide please. नेक्स्ट स्लाइड में जो बात कर रहे हैं दैट इज थॉट स्टॉपिंग टेक्निक के बारे में है. मीन्स लाइक डियर स्ट्रेस लेट्स ब्रेक अप. भाई हमारी आदत हो जाती है स्ट्रेस लेना. हम कहते हैं ना कई बार हम स्ट्रेस हमें नहीं खा रही है, हम स्ट्रेस को खाते हैं. मतलब आई गिव यू वेरी लाइव एग्जांपल. किसी फैमिली में भी हो सकता है, किसी टीचर के साथ भी, कुछ भी ऐसा जैसे कि सिचुएशन आई भी नहीं है, हम उसे फोर्स ही करके उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, जबकि वो सिचुएशन अभी आई भी नहीं और आने के आसार भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते हैं. या फिर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ, हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं. तो लाइक आई एम नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम लिविंग इन द पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर जो अभी मैंने देखा भी नहीं है, पता नहीं कब आएगा. ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट.
अपने आज के मतलब कहते हैं ना वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, प्लानिंग करो आगे की, बट प्लानिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दो. मेजरली यू शुड बी लिविंग योर मोमेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस. इस पे अपना पूरा फोकस रखो ताकि ये मोमेंट है आपको, आप इस चीज को मिस ना कर जाओ. सो व्हेन आई टॉक अबाउट थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स, इसमें क्या होता है कि लाइक कोई नेगेटिव थॉट मेरे मन में आ रहा है, और नेगेटिव थॉट डेफिनेटली मेरे एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा. वो नेगेटिव थॉट मेरे वर्ड्स में आएगा. कहीं ना कहीं मैं शो करूंगी, चिल्लाऊंगी, गुस्सा करूंगी, कोई तोड़फोड़ हो सकती है गलती से, या फिर कहीं ना कहीं केओस मच सकता है मेरे इसके कारण, थॉट्स के कारण, विच इज लीडिंग टू सच बिहेवियर. तो व्हाट इफ आई कैन स्टॉप दैट थॉट. वो कहते हैं ना कि मेरे को अनवांटेड गेस्ट अपने घर में नहीं चाहिए. हम लोग शायद कोई भी नहीं चाहते हमारे घर में अनवांटेड गेस्ट आए. तो जब मैं अनवांटेड गेस्ट नहीं आ सकता, लाना चाहती अपने घर में, तो मैं अपने इम्पोर्टेंट जो मेरा असेट है, दिस माइंड, दिस इज द सुपर कंप्यूटर दैट ऑल ऑफ अस हैव इट. जब ये सुपर कंप्यूटर हमारे साथ में है, तो इसके अंदर मैं अनचाहे, अनवांछित विचार क्यों अलाउ करती हूँ. ऐसे थॉट्स जो कि मेरी मेरी प्रोफिशिएंसी को, मेरी एफिशिएंसी को, और मेरे थॉट्स को सबको डाउन ले जाते हैं, मेरे सेल्फ एस्टीम को नीचे ले जाते हैं, तो मैं उनको अलाउ ही क्यों करती हूँ. मतलब लेट द रिमोट कंट्रोल ऑफ माय थॉट्स शुड बी इन माय हैंड्स. किसी ने कुछ कहा, लेट इट बी दैट पर्सन्स थॉट, मेरे को उससे क्या मतलब है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती अपने बारे में. So I have to really recondition myself, start from the beginning, and think about positive things related to myself. उसी थॉट को मुझे वहीं पे स्टॉप कर देना है, रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में, क्योंकि पता है गेस्ट भी, अनवांटेड गेस्ट भी ऐसे नहीं जाएंगे अगर आप उन्हें भगा दोगे. तो उन्हें भगाने के लिए भी आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भाई अब मत आना. तो यू क्लोज द डोर एंड टेल देम वेरी क्लियरली, अपने थॉट्स को बोलो, भाई मैं अभी नहीं, आई विल अटेंड टू यू लेटर ऑन. मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन भी नहीं हुआ. मैं सेकंड थिंग आई विल से इज कि आई डोंट वांट टू अटेंड टू यू, आप जाओ. अब वो थॉट क्या है, थॉट मैंने ही तो इकट्ठे कर करके अपने पास में रखे हुए हैं. मतलब अगर आज अपना फोन देखेंगे आप, फोन में अगर आपने बहुत, आपकी मेमोरी अगर यूज होती चली जा रही है, तो इट इज बिकॉज आप उसके अंदर अनवांटेड चीजें, जो कई सारी चीजें जो आपने हटाई नहीं है टाइम टिल टाइम, फोटोग्राफ्स जो पड़ी हैं आपके 3-4 साल से, आपको पता भी नहीं है क्या है, कहाँ है, रिट्रीवल के टाइम पे आपको मिल नहीं रही है, या आपको चाहिए ही नहीं. तो व्हाई ऑल दोस थिंग्स आर लाइंग इन योर फोन. और जब फोन में इतने, अगर हम करते हैं, अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, मेमोरी ज्यादा डलवाना चाहते हैं, या फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़वाना चाहते हैं, या क्लटर हटाना चाहते हैं, तो अपने सुपर कंप्यूटर के लिए हम ऐसा क्यों नहीं करते. you know take care of yourself, take care of your mind. Your mind is one of the powerful assets that all of us have. और टीचर्स के साथ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं है. जो स्टूडेंट्स जिनको वो पढ़ा रहे हैं 40 की क्लास में, plus multiplied by 4 or 3 sections that they are having, I mean they have the onus and responsibility of them as well. So we cannot, we actually cannot play with our minds. We cannot afford to not to take care of our psychological well-being. It has to begin today. I mean, today is an auspicious day, being the Teachers' Day. Take care of yourself, teachers, because you are the nation builders. आप ही हैं जिनकी वजह से बच्चे एक अच्छी परवरिश पाते हैं, एक अच्छी शिक्षा पाते हैं, और वही मल्टीप्लाई हो करके और पूरी सोसाइटी में जाते हैं. और अगर आपने अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल दिया पॉजिटिविटी के साथ में, I think they are going to give positivity to the entire society, and imagine what type of a society we are going to create, and ultimately what type of nation are we going to create. So please take care of your mental health. And still कहीं पे लगता है कि आप कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, then it is very much essential. Please, what you do is that you take care of, you consider the help, take the help of mental health expert who can definitely guide you, who can tell you how to move in the right direction, so that आप अपना ध्यान 100% रख सकें और एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, so that you can enjoy every moment of your life and do not feel the pressure of work, और आप एक एक वर्क को एक चैलेंज की तरह स्मूथली करते चले जाएं. Thank you so much, and
If there are any questions, I would like to take that. Yes, ma'am, definitely. This was a wonderful session, and I think a lot of people have a lot of comments for you. And if you can see, there were comments on the screen. There are a lot of comments, especially for you, ma'am. Thank you. You can see all the comments coming and going, coming and going. Every comment is unique and coming from a unique user. A lot of comments are coming. Okay, this was the big one. Okay, so if I read out the names, there are more than 100 participants who participated in this, and more than like 100 to 200 people just came and went. I think so because of they have some other commitments. So almost around 400 people joined the session, and this is also a great achievement when it's come to learning voluntarily. Because when you learn something voluntarily, when you don't need to pay anything, and you are learning something voluntarily, it needs a lot of other efforts. Okay, so if you have any kind of questions, you can ask in the comment box definitely. And I would also like to add, there is a common Sanskrit shlok which is there for teachers. Sanskrit is one of the richest language of India. So in Sanskrit we say Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. That definitely means Guru is the creator, that is Brahma. Guru is the preserver, Vishnu. Guru Deva is the destroyer, that is Maheshwara. Guru is absolute. Guru is secular. So Guru is one. Lord Himself is the Guru. And greetings to the Guru. That the last line and the last sentence. Tasmai Shri Guruve Namah. Greetings to you, my teacher. Greetings to you, my Guru. Oh, Yeah. So it is a common, usually said in Sanskrit. So if you have any kind of questions, you can ask in the comment section. Okay, there are more thank you comments for you coming, ma'am. oh, Okay, it is wonderful session, ma'am. On this Teachers Day, got gift from you. Okay, thank you, ma'am. How to stop overthinking? Okay, ma'am. One question is there for you. How to stop overthinking? hmm. Okay. Uh, yes, overthinking ये it transposes us to a different world जहाँ पे हमें लगता है कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हमें हर चीज मैग्निफाइड फॉर्म में नजर आने लग जाती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट वो प्रॉब्लम भी हमें लगती है कि वो ये हो गया ऐसे हो गया, हम अपने एक डिफरेंट तरीके के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं. तो बेस्ट थिंग अबाउट ओवर थिंकिंग इज गेट एंगेज्ड इन समथिंग मीनिंगफुल, get engaged in doing something, and or rather listening to some good or reading some good literature where you're actively involved in it. उससे क्या होगा कि आप जब फोकस करके कोई काम करना शुरू करोगे तो वो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. और इसमें भी हमें एक ट्रिक खेलनी होगी कि लाइक वी हैव टू गेट आवर माइंड बैक टू आवर लर्निंग मोड, अंडरस्टैंडिंग एंड रैशनल मोड. तो उसमें जब भी ये ओवर थिंकिंग वाले मोड में जाना शुरू करता है, हमें उसको पकड़ के वापस किसी लॉजिकल काम में लाना होगा, और उसके लिए इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. लिसन टू गुड म्यूजिक आल्सो, ट्राई अ बिट ऑफ मेडिटेशन एंड कीप गुड कंपनी, क्योंकि कहते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ, और अगर आप अच्छे थॉट्स शेयर करते हो
तो वहां से आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, और आपकी ओवर थिंकिंग की बजाय आपकी थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वेल डिफाइंड मैनर में होनी शुरू हो जाती है. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for answering the question. Other than that, I would like to make a small announcement that the links are open. You can opt for certification as well as you can go to the feedback link too. If you have any kind of feedback, negative or positive, all your feedbacks are welcome. And PsyCoolG commits to convert your feedback into feed forward. Definitely, we are working on each and every concept which you will be sharing with us in the feedback link. So definitely, other than that, we have more comments, ma'am. I wanted to ask what can school lecturers do School to help the leaders. oh sorry school leaders. Okay, I'm really sorry for miscommunication. I wanted to ask what can school leaders do to help the teachers during this pandemic? Yeah. Okay. It's a very practical question. In fact, क्योंकि teachers they are actually feeling themselves overburdened with the change in the shift from offline to online mode. सब कुछ उनके लिए नया है, और टेक्नोलॉजी ठीक है, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, बट टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं. वेयर इट कम्स टू एंगेजिंग द स्टूडेंट्स, चैलेंज बहुत बड़ा है. एंगेज भी करना है बच्चों को, और उनके प्रैंक्स से उन्हें अपने आप को बचाना भी है, और देखना है कि दैट लर्निंग इज डिसेमिनेटेड इन अ वेरी गुड मैनर वेयर दे हैव वेरी लिमिटेड कंट्रोल. नाउ school leaders, what they can do here is first of all collaborating with the parents. There has to be a system within the school itself जहां पर पेरेंट्स के साथ एक, हम कहते हैं पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, वो वैसे भी होती है जब हम ऑफलाइन मोड में थे, पर अब ज्यादा पार्टनरशिप की बात करेंगे क्योंकि आज की डेट में बच्चा कन्फाइंड है स्कूल के अंदर, और वहां पर पेरेंट्स मॉनिटर कर पा रहे हैं. तो वहां पर टीचर कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी हाउस, इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दे आर नॉट डूइंग इट. तो यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि उनको एक अच्छा कम्युनिकेशन का मोड दे, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी हो, दे आर गिविंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ओवर देयर, जहां पर दे आर इंश्योरिंग दैट टू सिबलिंग्स आर नॉट बीइंग सीटेड, और पूरी तरीके से पेरेंट्स जो कुछ कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें. नाउ हियर द स्कूल लीडर्स कैन talk to the parents, in fact send the circular to the parents and request for cooperation. That is very important. And then at the same time, let's say there is a teacher who's teaching section A and another B and the third one C, something like this. What happens is you can share, it can be in some way it can be made, the things can be made in such a way that the PowerPoint presentation or learning strategies, it can be shared. तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 50 क्वेश्चंस किसी टीचर ने दिए हैं करने के लिए, एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. 50 क्वेश्चन दिए असाइनमेंट में करने के लिए, उसको करते करते लेट से 6 दिन लग जाएंगे, और जब एक बच्चा 6 घंटे तक बैठेगा रोज का, सो पॉसिटी ऑफ टाइम इज देयर. तो that is not possible. That seems to be a Herculean task. So what can be done here is that teachers are preparing a portion and they are sharing with the other teachers who are teaching the same class but different sections. So this kind of cooperation and collaboration within the teachers, between the teachers, is going to help a lot. Secondly, training of the teachers to be provided by the school leaders, and many schools are actually doing it. ट्रेनिंग में भी क्या है कि कोई टीचर किसी एरिया में बहुत अच्छी है, कोई किसी में बहुत अच्छी है, तो उनके जो क्वालिटीज के हिसाब से उनको उस तरह का टास्क दिया जाए. देन सुपरविजन भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली लीनियंट फॉर्म में हो, क्योंकि एवरीवन इज एक्चुअली इन हॉट करेंट्स बेसिकली, तो उनको अभी समझने में, अडेप्ट करने में सब में टाइम लग रहा है. तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और हार्श एनवायरनमेंट ना हो, बट एट द सेम टाइम ओनर्स भी होना हो टीचर्स के ऊपर कि हाँ उन्हें एक क्वालिटी वर्क देना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात आ रही है. कई बार क्या होता है स्कूल लीडर्स स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, बट देन वहां पे अगर हम उनकी साइकोलॉजी समझें, दे वांट टू डिलीवर द बेस्ट, दैट इज देयर. बट यहाँ अगर टीचर्स भी मिल के कोऑपरेट करके
अपनी प्रॉब्लम्स खुल करके बताएं लीडर्स को, अपने स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सुपरवाइजर्स है, एचएम्स है, प्रिंसिपल्स है, rather than having a representation, they individually portray, they share their problems and all. Then I'm sure the school leaders, because they want the best, they want the staff to be engaged and be retained with them. They will definitely listen to their problems and take some good steps so that they are feel satisfied. I hope I've answered your question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely, you answered the question, and we will make it a little quick. So, okay. So links are there in the description as asked in the comment. Thanks a lot. Excellent session. A lot of positive comments, positive feedbacks are there for you, especially, ma'am. And people are liking your presentation actually. So the feedback link is already given. Okay. It was a wonderful session. Okay. Certificate link. Okay, certificate link is open now. Session was very useful by Kavita ma'am. Thank you. Okay, PsyCoolG spelling is wrong, I think so. Okay, Geeta ma'am, not an issue. Thank you. Thank you. Oh, okay. We have already talked about overthinking. Thank you This is so the much. comment. आपने जो श्लोक बोला था उसके बारे में, I'm really happy that you like this session and you gained something out of it. I'm very happy about it. Happy Teachers Day. Okay. So we have gone through each and every comment. Please check description box for all the links. Again, I'm saying to you, every participant. Okay, okay. Okay, we have discussed this already. Okay, so I think we have taken all the questions from the feedback, from the comment section. Certificate link is already given in the mail itself. If you can open your mail, so you can check out the certification link. Okay, so we are concluding the session with this. I thank you, ma'am, for such a wonderful session. We are receiving a lot of positive comments about the session for the session. So this particular session was an initiative by PsyCoolG Connect, which is an initiative by PsyCoolG Wellness Private Limited. We are continuously organizing the free webinars for you all. Our motto is to connect each and every student to an expert. And because usually when school, colleges, and everything were open, we used to have different kind of workshops, seminars in our schools. But now, when schools, colleges, universities, and every institution are closed, somehow not all people are able to reach verified, experienced, and knowledgeable experts. We are trying to connect the bridge which is broken somehow due to COVID or due to this particular pandemic situation. And we are here to connect each and every student, and that's why we are providing it for free. We also provide some premium webinars also. So you can check out our website for all the details, and you can connect us using WhatsApp. I think so all the participants who have been registered are also a part of a WhatsApp group now. So they can get all the details regarding our upcoming webinars too. Do not leave the group. You will be receiving positive and good messages in the particular group. Okay, the recordings for this session will not be available after 6 p.m. The links will be closed. So I congratulate each and every participant who are going with the certificate and who have attended the session. With this, I would like to conclude, and I would like to thank Ma'am Poonam from my heart, deep inside.
and I'm still a student, and I'm learning a lot, and I'm learning a lot from ma'am. And there are few things which I want to discuss at the last. Actually, ma'am is our support system. Ma'am has been guiding us, my whole team, and we usually take a lot of guidance from ma'am, and ma'am never says no. That is the biggest thing. That is the biggest motivation for us, that ma'am never says no for any kind of questions, any kind of suggestions we need every time. And I thank you, ma'am, on this special occasion. I really thank you. That's why it was well said when I said that particular slok in Sanskrit, and then I converted that to English. So that is the perfect line. Tamsai Shri Guruve Namaha. That is greetings to you, ma'am. Greetings to my Guru. Thank you a lot. Thank you, my teacher. With this, I would also like to end the session, and I would also like to say to each and every participant, say Happy Teachers Day to your teachers. Don't forget them, because they are very important, and they made you where you are. Thank you. I would like to say end with one this thing Yes, few ma'am. lines. तो कहते हैं ना, लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती. लोग कहते हैं कि लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं कहती हूँ कि सर पर अगर हाथ हो अगर गुरु का, तो लकीरों की जरूरत ही नहीं होती. लकीरों की जरूरत ही नहीं. Definitely, ma'am. Definitely, ma'am. Definitely. लकीरों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती अगर सर पे हाथ हो गुरु का, टीचर का. बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हर चीज गुरु ही सिखाते हैं, हर चीज टीचर्स ही सिखाते हैं, और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, और डेफिनेटली उन्हें याद रखना चाहिए. हैप्पी टीचर्स डे. एंड विद दिस आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द कंक्लूजन. Okay, so with this, we are ending the session, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for being there with us. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thank you. All the participants can visit www.coolconnect.in for all the details. And we are going to run the last introductory video for you all. Thank you.